I've been making a lot of shorts lately, but today I wanted to make a longer video because this is a question that I'm being asked a lot. So before I get into the video, a quick request for everybody to subscribe, turn on the notification. I'm starting to really enjoy this journey where I am talking at length about the opportunities and the possibilities of planning your educational and professional journey in Canada, as also things that you need to be aware of, things that you need to get some training on, things that you need to execute on to develop your own leadership potential and start developing a better sense of business strategy. So, मजा आ रहा है. आई रियली अप्रिशिएट द क्वेश्चंस. अभी भी मुझे क्वेश्चंस कमेंट्स के थ्रू कम आ रहे हैं और दूसरे चैनल्स के थ्रू ज़्यादा आ रहे हैं. Please try to engage with me through the comments in the videos, because what that does for me is it allows me to bring the answers forward through the comments, and in the process बाकी लोगों को भी उनके बारे में पता चलेगा. क्योंकि अगर आप मुझे क्वेश्चन थ्रू ईमेल भेजते हैं या थ्रू लिंक्डइन भेजते हैं, दैन उसका आंसर सिर्फ आप तक रह जाता है. अगर आप वही क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी है. सो वेयर पॉसिबल प्लीज़ आस्क क्वेश्चन थ्रू कमेंट्स, एंड एज आई requested before, please subscribe and also turn on the notification. So the question that I want to answer today is कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं, does it make sense to attend a college or a university in Canada? So it depends upon several factors. आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है, आपका बजट क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका प्रेफर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है. तो बेस्ड अपॉन दोज देर आर सम key differences and some considerations that I'm going to walk you through so that you can make a more informed decision. So let's first look at colleges. So जो colleges होते हैं उनका focus applied learning की तरफ ज़्यादा है. Colleges, they typically offer more hands-on, practical and career-oriented programs. So उनका emphasis है students को provide करने skills that allow them to enter the workforce quickly. So programs usually shorter होते हैं, 1 to 3 years. You usually get a diploma or an advanced diploma or certificate out of it. So, shorter program, more focused with an intent to get people out into the labor. Cost, relatively speaking, compared to universities, colleges की costs थोड़ी कम होती है. क्लास साइज और लर्निंग एनवायरनमेंट, कॉलेजेस के जो क्लास साइज है वो अगेन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग इन फॉर एन अंडरग्रेड. जो पहले 2 साल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उनमें क्लासेस थोड़ी बड़ी होती हैं और इससे आपको पर्सनलाइज अटेंशन और सपोर्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स कॉलेज एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है. सो लाइक आई सेड बिफोर, लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ ऑफन मोर प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन. But one thing that you have to understand is कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो there are pathways to university. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि most colleges have agreements in place with the universities which allow students to transfer credits and continue their education at a university to obtain a degree. So instead of a certificate or a diploma, आपको डिग्री मिल सकती है. Employment के terms में, as I mentioned before, the programs are designed to prepare students for specific careers. जिससे कि higher employability in certain trades and technical fields immediately after graduation. पर वो decide होता है कि आपने program कौन सा pick किया. So अगर program in demand है employers में, तो college जाके आपको you get faster into the employee workforce. Yeah. Now let's look at the universities. यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोग्राम फोकस होता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है. एकेडमिक ओरिएंटेशन ज़्यादा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, एंड स्पेशली फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रिसर्च ओरिएंटेशन होती है. सो एज अपोज टू कॉलेजेस, दे टिपिकली फोकस ऑन द थियोरेटिकल नॉलेज और एकेडमिक रिसर्च, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन और रिकॉग्निशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. They tend to have a higher reputation and more of a global recognition.
सो विच इज़ इम्पोर्टेंट अगर आप फर्दर एजुकेशन या इंटरनेशनल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो तो यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन दैट दे हैव गेट a little bit more consideration. So class size, as we discussed before, universities का class size थोड़ा बड़ा होता है, especially in the first couple of years of undergraduate programs. और जो learning environment होता है उसका focus instead of applied learning, theoretical होने के करके lecture based ज़्यादा होता है और उस लर्निंग एनवायरनमेंट में आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेस भी ज़्यादा होती है. अगर आपका रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट है तो आप अंडरग्रेड में भी लैब्स को अप्रोच कर सकते हो. सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, अगर आपको करियर परस्यू करना एकेडेमिया में या रिसर्च इंटेंसिव फील्ड्स में तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे प्रेजेंट यू विद अ बेटर पाथवे टू दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट एक्सपीरियंस दोनों का ऑफन सिमिलर होता है, स्पेशली इफ यू गो टू अ बिगर कॉलेज लाइक एल्गोनक्विन कॉलेज और लैम्पटन कॉलेज. बट यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लब्स और सोसाइटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं. सो ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस की पॉसिबिलिटी होती है. बट लाइक आई सेड, लैम्पटन, एल्गोनक्विन जैसे कॉलेज उनमें वो कंसिडरेशन उतनी ही पावरफुल है फ्रॉम अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू. सो करियर गोल्स फॉर यूनिवर्सिटीज़, लाइक आई सेड, गोल अगर जल्दी है जाने का तो फिर यूनिवर्सिटी में न जाएं, फिर कॉलेज को चूज करें. लाइक इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू द वर्क फोर्स क्विकली देन कॉलेज को चूज करें. इफ़ यू आर लुकिंग टू गो आफ्टर थियोरेटिकल नॉलेज, ग्रेजुएट डिग्री करनी है, देन यूनिवर्सिटी माइट बी मोर सूटेबल. नाउ लेट्स लुक एट द बजट. सो वी टॉक्ड अबाउट इट कि कॉलेजेस की फीस थोड़ी कम होती है, यूनिवर्सिटीज़ की टिपिकली ज़्यादा होती है. सो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इन कंसिडरेशन लेके चलें कि दोनों का कॉस्ट डिफरेंशियल क्या है. यूनिवर्सिटीज़ में यूजली ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट मिलनी थोड़ी ज़्यादा आसान होती है. यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, कनाडा में थोड़ा डिफरेंट है. नाउ डिसीजन कैसे करना है? आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए कि ज़्यादा थियोरेटिकल एकेडमिक अप्रोच चाहिए? दैट एज आई हैव मेंशन्ड एंड आई कीप ऑन इंसिस्टिंग, आप उसको डेफिनेटली इन कंसिडरेशन लेके चलें. पर अगर आप अनडिसाइडेड हैं, then you can start at a college with an option to transfer to a university later on. That gives you a lot of flexibility. ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स में मेरे को मिसिंग दिखती है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा और ज़्यादा इंसिस्ट करना चाहता हूँ. जो लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जिसमें फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्लाइमेट एंड कम्युनिटी आते हैं, उनको भी बहुत क्लोजली देखें बिकॉज समटाइम्स that has a huge impact, especially from an employment point of view. So in conclusion, dono colleges or universities in Canada offer excellent educational opportunities, but the best choice for you will depend upon your own individual needs and goals. Assess your career aspirations, financial situation, and your preferred learning style to make an informed decision. If possible, कुछ current students को reach out करो, alumni को reach out करो, कैंपस पे अगर फिजिकल विजिट कर सकते हो तो ज़रूर करो. और अगर वो इंफॉर्मेशन सेशंस दे रहे हैं then definitely attend those information sessions to get some more insights about the educational opportunities. अब इसमें I want to come back to, as I'm concluding this, to talk a little bit more about that pathway from a college to a university or vice versa. You could have started in a theoretical research focused environment and then realized कि more hands-on applied kind of a learning environment would make more sense for you. But more importantly, as you get a better sense of कि employment opportunities क्या हैं, especially एक particular geographical location में, it may make more sense to go into a college environment. So the bottom line on that is in Canada, you have access to that flexibility. It is possible to move from one to the other. Now, उसकी जो एक बहुत बड़ी dimension है, जो then that you have to really remember then is जो मैंने एक short में couple of days ago बनाया था, जो कि you have to, irrespective of whether you are in a university environment or a college environment, जब आप अपनी educational pursuit कनाडा में शुरू करते हो,
जो पहला सेमेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंड आई एम गोइंग टू कोट माई सेल्फ, बिकॉज अगर आपको पहले सेमेस्टर में एक ठुड्डा लग गया, हमने 5 कोर्सेज लिए हैं और उन 5 कोर्सेज में से लेट से 4 में आपका डी ग्रेड आ गया, then you have to understand कि then over the rest of your educational journey with that institution, there have to be at least 4 courses in which you have to get an A plus to have any possibility of getting a net B grade averaged out over those 8 courses. Or that adds to the stress that you already have as an international student. So usually people when they come in during the first semester or the first year, they take it a little bit casually. थोड़ी competing प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, जॉब ढूंढनी है, फाइनेंशियली वरिड हो, घर वालों को मिस कर रहे हो, और उस चक्कर में क्या होता है कि पहला सेमेस्टर जो होता है वो थोड़ा इग्नोर भी हो जाता है. तो स्पेशली अगर आपकी एस्पिरेशंस ये है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में विदाउट हैविंग अ क्लैरिटी ऑन वेयर यू वांट टू लैंड आगे हो, तो अगर आपने अपने लिए वो दरवाजे खुले रखने हैं, इफ़ यू वांट टू हैव दोज अपॉर्चुनिटीज ओपन टू यू, then just come and do really well in that first semester. Because कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र होना है, वो ट्रांसफ़र होने के टाइम पे उन कोर्सेज के ग्रेड्स आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. और ये चीज़ लाइक आई सेड बिफोर मुझे स्टूडेंट्स में नहीं दिखती, ये अंडरस्टैंडिंग और ये क्लैरिटी, एंड आई रियली वांट टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर इट. सो एनी क्वेश्चंस, लीव दोज क्वेश्चंस इन कमेंट्स फॉर मी, और यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि मेरे बैनर में है. ऑल द बेस्ट.